In a major crackdown, Sambalpur police have exposed a large-scale illegal trade of codeine-based cough syrup. Acting on a late-night tip-off, Baraipalli police intercepted a pickup van near Mesenkata Chak and seized over 5,100 bottles of cough syrup, commonly misused as a narcotic. The consignment, smuggled from Cuttack to Sambalpur in a pickup van and a sedan, led to the arrest of 20 individuals. Police also recovered Rs 40,920 in cash and 5 mobile phones from the accused. Preliminary investigation reveals that the racket was managed via UPI-based payments, with distribution aimed at retail-level peddlers across western Odisha. Authorities estimate the market value of a seized consignment of cough syrup bottles at around Rs 15 lakh. Sambalpur SP Mukesh Kumar Bhammu confirmed that a case under the NDPS Act has been registered and further arrests are expected. He also noted that property of key accused will be seized. Police say demand for such substances typically rises during festivals and efforts are ongoing to identify the main suppliers operating out of Cuttack. Surprise raids continue across the region as part of the crackdown. बरईपल्ली पुलिस स्टेशन रे 195 केस नंबर रे गोटे एनडीपीएस सेक्शन रे गोटे केसटा हेची आपण माने देखंतु स्पेशली फेस्टिवल सीजन रे जो कप सिरप को लेके सब जिला रे चालुसंती और ओडिशा सरकार रे भी प्राथमिकता रही छंती सब तरह कि आपण देखंतु तमिलनाडु रे भी कप सिरप रिलेटेड बहुत गुडा बेआईन फैक्ट्रीटा निर्मित होचंती तो बरईपल्ली पुलिस स्टेशन रे गोटे इंस्पेक्टर तांका टीम भलो काम करिसंती आगरो हमें नोटिस रेथिलु कि फेस्टिवल सीजन रे कड़ाकड़ी हो से हिसाब रे हमें गोटे केस रजिस्टर हेची पाखापाखि हमें 20टा एक्यूज को अरेस्ट करिछु से गोटे पिकअप और गोटे स्विफ्ट डिजायर हिसाब रे एस्कॉर्ट करके कटक रु से माने मालटा आनिथिले ताकरे एठा से लोकल छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को से माने आइडेंटिफाई करिसंती ताको से आसिकरे मालटा समूह पाड़ा रे बिक्री करिवार ताकर प्लान थिला।